So let us discuss enthalpy during phase transition. What is actually phase transition? Phase transition is when a substance changes from one phase to another phase. That is from solid to liquid, or from liquid to vapor, or from solid to vapor. This is known as phase transition. This phase transition of a substance takes place at a particular temperature. During this phase transition, enthalpy gets changed. That means there is enthalpy change during this phase transition. That means heat is evolved or absorbed. So there are three types of phase transition which we are going to discuss here. Number one is enthalpy of fusion. What is meant by enthalpy of fusion? Enthalpy of fusion is defined as the enthalpy change accompanying the transformation of 1 mole of a solid substance into its liquid state at its melting point. उसका ये मतलब है जब एक solid substance convert होता है into its liquid state at its melting point. During this process, enthalpy is changed. That is known as enthalpy of fusion. The enthalpy change is known as enthalpy of fusion. This is also called molar enthalpy of fusion because 1 mole of a substance is involved. So for example, we have water, it is a solid, it gets converted into water, into liquid. Water, the liquid phase. Here, the enthalpy change del F U S H enthalpy of fusion है. ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं del F U S सबस्क्रिप्ट लिखते हैं पर फिर H is equal to plus 6.0. ये 6.0 kilojoules per mole. So this much of energy is here absorbed. So this is known as enthalpy of fusion. So in short, we can say that when 1 mole of a solid substance gets transformed, gets converted into its liquid phase at its melting point, the enthalpy change is known as enthalpy of fusion. Now we have one more, that is enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. What is meant by enthalpy of vaporization? Enthalpy of vaporization of a substance may be defined as the enthalpy change when 1 mole of a liquid substance is converted into its vapor form, its vapor phase at its boiling point. This is represented by del VAP. Vaporization is subscript with VAP, फिर H, del VAP H. This is enthalpy of vaporization. So इसको हम ऐसे करते हैं enthalpy of vaporization को. So if we'll take example of water, it is a liquid water. It gets converted into this vapor, यानी गैस में ये कन्वर्ट होता है. यहां पर जो enthalpy change आती है, that means enthalpy of vaporization. That is what enthalpy of vaporization. That is equal to, this is plus 40.7 kilojoules per mole. This is also called molar enthalpy of vaporization because here 1 mole of substance is involved. यहाँ पर 1 mole involved होता है substance का. Therefore, it is also called molar enthalpy of vaporization. यहाँ पर जो enthalpy of vaporization, अगर हम मानेंगे enthalpy of condensation, इसका reverse process है condensation vaporization का. Condensation इसका reverse process है. अब उसका जो
एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन वो तो सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, दैट मीन्स 40.7, सिर्फ यहां पर साइन अपोजिट होगा, यानी उसका होगा -40.7 किलो जूल्स पर मोल, इतना फर्क होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन का, बिकॉज दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द वेपराइजेशन। सो सिर्फ एक फर्क होगा, द साइन ऑफ द जो साइन होगा इसका दैट विल बी अपोजिट, अगर इसका प्लस साइन है उसका नेगेटिव साइन होगा। एग्जैक्टली जो हमने इससे पहले पढ़ा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का जो अपोजिट प्रोसेस, यानी फ्यूजन का अपोजिट प्रोसेस है फ्रीजिंग, यानी सो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग अगर हम लिखिए एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग होगा, उसका होगा एंथैल्पी ऑफ वेपर फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग का होगा सेम मैग्नीट्यूड, सिर्फ साइन होगा अपोजिट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का अगर पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव 6.0, उसका होगा नेगेटिव 6.0 एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग का, बिकॉज फ्रीजिंग इज रिवर्स ऑफ फ्यूजन। नाउ वी हैव वन मोर, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। व्हाट इज सब्लिमेशन? सो वी हैव सम सबस्टेंसेस, हमारे पास कुछ सबस्टेंसेस होते हैं which are sublime, जो sublime that means they directly get converted from solid to vapor, from solid to vapor, they are said to be sublimes and the process is known as sublimation. So what is now enthalpy of sublimation? When 1 mole of a solid substance directly gets converted into the vapor, into this vapor form, into this vapor state at a given temperature below its melting point. The enthalpy change is known as enthalpy of sublimation. So हम ऐसे भी कह सकते हैं enthalpy of sublimation is the enthalpy change when 1 mole of a solid substance converts directly into vapor at a particular temperature, at a given temperature below its melting point. So if I take an example of iodine, iodine is a sublime. ये iodine ये यहाँ पर solid है, ये iodine बनता है, इसको बनता है vapor, gas। यहाँ पर जो enthalpy of sublimation है, enthalpy of sublimation, यहाँ पर हम लिखते हैं subscript SUB, this is enthalpy of sublimation, this is equal to plus 62.39 kilojoules per mole. So this is enthalpy of sublimation. यहाँ पर ये solid iodine converted directly होता है into gaseous form or into vapor form। इस process के दौरान जो enthalpy change आती है that is known as enthalpy of sublimation. Most solids which are sublime, which are sublimes, which sublime, sorry, यानी most solids which sublime, they are molecular solids, ये होते हैं molecular solids। हमारे पास बहुत सारे solids होते हैं, atomic solids, ionic solids, so ये होते हैं molecular solids जो यहाँ पर ये जो sublimation दिखाते हैं, यानी which sublime, they are molecular solids like iodine है या naphthalene है, naphthalene is also a sublime substance। Sublimation is actually, it is nothing, it is actually जो sublimation होता है, it is actually fusion। sublimation होता है actually fusion and vaporization, fusion and vaporization carried out in one step, यानी जब फ्यूजन और वेपराइजेशन एक स्टेप में होता है, that is actually sublimation, वही होता है सब, ये वन स्टेप में कैरी आउट एक स्टेप में होता है, जब फ्यूजन और वेपराइजेशन होगा वन स्टेप में, दिस इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि del SUB enthalpy of sublimation is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of वेपराइजेशन, ये ऐसे हम लिख सकते हैं, इस ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज
फॉर ए फेज ट्रांजिशन डिपेंड्स अपॉन, जो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एंथैल्पी चेंज का ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी चेंज फॉर ए सबस्टेंस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगे उतना एंथैल्पी चेंज ज़्यादा होगा यहाँ पर, ये इस पे डिपेंड करता है। सो अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल वाटर का, अगर हम लेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वाटर का अगर हम लेंगे डेल वेपराइजेशन लेंगे वाटर का, इट इज मोर देन एंथैल्पी वेपराइजेशन ऑफ एसीटोन, ये उससे ज्यादा है, वाटर का एसीटोन से ज्यादा है एंथैल्पी वेपराइजेशन, बिकॉज जो वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन this that is more than the intermolecular forces in acetone. So this was about enthalpy during phase transition, enthalpy change during phase transition.